ये सेट ऑफ 2 है which I got for 699 and थोड़ा white वाला भी डालेंगे इसमें and it's just gonna look pretty. Good morning Mau fam. Hello, how are you guys doing? I am honestly very annoyed at this point. It's because I will show you why. Look at this. Look at the halat of my studio room. Like, why does it look this messy? Why there is so much pasara even when I have a bigger studio now? Like, it just mind boggles me. And I have understood one thing that if I don't organize, my life is gonna be shit and I'm gonna start feeling icky and sad and whatnot. Like cluttered thoughts aane chalu ho jayenge because I am in a cluttered place. So today's agenda is going to be that we need to organize stuff. And I'm gonna take your opinions as well because I am thinking to redo certain corners of my house. जैसे मेरा जो bedroom है उसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है. It's just the bed and the wardrobe जो अंकल ने दिया हुआ है. बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है वहाँ पे. So I'm thinking to redo that. I have done like one change which I'll show you. So yeah, आज हम जाने वाले हैं mall. आपने देखा ही होगा आज के टाइटल से that we are gonna go and shop for home decor. I have no idea कि ये वीडियो कहाँ जाने वाला है because पता चला मॉल में गए और कुछ भी नहीं मिला तो ये वीडियो की टाई फिश हो जाएगी. You guys see how messy this looks. These two look nice still, but ये दोनों काफी cluttered लग रहे हैं. पहले वाले स्टूडियो में ये सारे कैंडल्स यहाँ हुआ करते थे. आई एम थिंकिंग कि मैं वो खाली करूँ, ठीक है, एंड वहाँ पे जूट बॉक्सेस डाल दूँ एंड वहाँ पे आई कैन लाइक पुट ऑल ऑफ दिस कचरा सामान जो भी है सो दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड अंदर जो भी है मेस वो लोगों को ना दिखे. बेसिकली व्हेन मृदुल के साथ जब मेरा शूट था सो वी हैड शिफ्टेड अ लॉट ऑफ सामान इन माई बेडरूम एंड स्टूडियो रूम बिकॉज हॉल में हम शूट कर रहे थे. एंड तब ना मैंने ये इधर रखवाई थी. ये हमारे पुराने वाले स्टूडियो में भी थी बाय द वे. तो मैं वो इधर लाया हूँ बिकॉज ये कॉर्नर काफ़ी खाली लग रहा था. दिस इज माई बेड बाय द वे. दिस इज माई बेडरूम एंड देन वेन एवर आई post stories or something, this used to look very blah. So this is how the situation is. It's almost 12 o'clock. My assistant will come any minute. I have to do my skincare and then we'll head out and see if we get something in the mall. These are my outfit details. This very cute top is from H&M and these shorts are also from H&M. These shorts I actually showed in my latest haul. H&M वाला सो जो मतलब वो जाके देख लेना. I'm actually dreading to do my makeup because you guys can see that I am having like 2 breakouts on my forehead because last week was very hectic. इतने सारे back to back shoots थे, फिर award function था Femina and then it was just like too much on my skin. So yeah, anyways I want to let it breathe, so I'm just going to like conceal my under eyes, eyebrows and lipstick, no foundation, nothing. So yeah, that's what we're gonna do. Alright, I've already done my skincare and for sunscreen we have this right here. This is the Aqualogica Glow Plus Dewy Sunscreen. You must be thinking that this looks a little different. It doesn't have that pump packaging because this is a bigger pack that they have launched now and it is like the squeezy tube which I personally love because now you don't have to worry about finishing your sunscreen very quickly. So yeah, it is available in a bigger pack now. This sunscreen is completely lightweight, has a quick absorbing formula and also gives you a dewy glow with zero white cast. It has SPF 50 with PA quadruple plus, broad spectrum protection from UVA, UVB and blue rays. It's fragrance free and color free. Aqualogica is vegan, cruelty free and clean. It also has unique water lock technology which locks moisture into the skin. Of course I have a coupon code as usual which will give you 20% off on their website, but these products are available on Amazon, Flipkart and Nykaa. Hi guys, we have reached the mall and we are gonna hit 3 stores. West side और क्या था? होम सेंटर, मिस्टर DIY. एंड हम ज़्यादा फुकट में शॉपिंग नहीं करेंगे. आई हैव टोल्ड माई सेल्फ जो भी मैंने लिस्ट बनाई है मैं उतना ही शॉपिंग करूँगी. एंड या लेट्स सी व्हाट ऑल वी गेट. आई एम गोना मेक अ हॉल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो व्हाइल वी ऑर्गेनाइज स्टफ. सो या
इतना सारा डैमेज हो चुका है. लेट्स गो होम. घर जाके आई विल शो यू गाइज द एंटायर हॉल. बट अभी हमने लंच कर लिया है. इट्स ऑलमोस्ट 3:45. चला. Hey you guys, we are back and we have 1, 2, 3, 4 bags to unpack. So I'm just gonna quickly show you what all I got. Let's start with west side. Alright, the first thing we got is this cute bed sheet. My mom is taunting me literally कि तेरे घर पे सिर्फ 2 ही bed sheets है क्या? So I just have like the dark blue one and a beige one. और ये pink color का मैं ढाप के लेके आई घर से. So like I don't have good bed sheets. And honestly मेरा जो bedroom है वो काफ़ी bland और there is no color as such and I'm just feeling very ill about it. So I thought let's get nice bed sheets. एंड यू मस्ट बी लाइक ये भी तो वाइट ही है, मतलब इसमें इतना क्या उखाड़ लिया. बट मैंने और एक अच्छा ढिंचैक कलर लिया हुआ है. बट दिस आई वॉन्टेड बिकॉज द प्रिंट वॉज टू ब्यूटिफुल एंड इट्स कॉटन सैटिन. दिस इज फ्रॉम वेस्ट साइड होम एंड आई गॉट दिस फॉर इसमें लिखा है 2000 बट आई थिंक आई गॉट इट फॉर अराउंड 1700 और समथिंग. सो दैट्स दैट. देन आई गॉट दीज 2 नैपकिन्स बिकॉज ना मेरे किचन में अवन है और छोटा फ्रिज है जो हमारे जूने वाले स्टूडियो में था. उस पर बहुत धूल जम रही है. सो मैंने ये लाया हुआ है टू जस्ट लाइक कवर इट अप. एंड देन आई गॉट दीज जूट बास्केट्स विच आई होप दे फिट इन माई शेल्फ. अदरवाइज विल डू समथिंग अबाउट इट. बाथरूम में रख देंगे. बट ये सेट ऑफ 2 है विच आई गॉट फॉर 699. देन लास्ट थैली फ्रॉम वेस्ट साइड आई गॉट दिस क्यूट water bottles जिस पे लिखा है पानी and H2O. So these are 2 bottles. One is in this like very nice green color and one is white of course. Then I got this जिस पे लिखा है self care. This cute thing. I think I can keep this in the bathroom or on my nightstand. तो वहाँ पे रख सकते हैं इसको and I can just keep my skin care, hand creams and like moisturizers and everything. Then we went to home center. इसमें से मैंने ये बेडशीट खरीदी है. दी डेकोर. वेरी एक्सपेंसिव यू गाइज. दिस इज फॉर 2400. मेरी माँ मार डालने वाले जब ये देखेगी वीडियो को. एनीवे सो आई गॉट दिस वेरी ब्यूटिफुल से ग्रीन पाइन, नॉट पाइन ग्रीन. व्हाट इज दिस कलर? आई डोंट नो बट यू कैन सी दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कलर. मेरे वॉल पे भी है ये कलर, फिर मेरे गद्दों पे भी यही कलर है. सो आई वांटेड समथिंग इन दिस. इट्स अ वेरी नाइस कलर. क्लियरली आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कलर. सो आई गॉट दिस. आई गॉट दीज what is this called? Baby breath I guess, but artificial. And I will show you कि मैंने इसको क्यों लिया है. but I wanted to like just show you right now. Once I assemble it you'll know exactly. And then I got this planter. Don't know exactly क्यों लाया but this was just like for 450 rupees and it looked nice so I can just keep it here. तो ये हो गया. Then next up, wow it's matching, is this cute vase, whatever you want to call it. I'm gonna keep this in my bedroom. You will see हम लोग थोड़ा experiment कर रहे हैं अभी. You will see मैं किसके लिए लाया ये. This was थोड़ा expensive in my opinion. This was for 1199. So almost 1200 rupees. थोड़ा expensive लगा but the quality is good and plus it's home center. तो I mean है home center का थोड़ा सामान expensive. And this looks, मैं थोड़ा shabby तरीके से दिखा रही हूँ but this looks so cute. See this. क्यूट. अभी थोड़ा इसका साइज थोड़ा ट्रिम करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा एंड थोड़ा वाइट वाला भी डालेंगे इसमें. इट्स जस्ट गोना लुक प्रिटी. फिर सेकेंड लास्ट आइटम इज दिस जस्ट फॉर 299 रुपीज़. दिस ऑयल डिस्पेंसर बॉटल बिकॉज मेरे पास जो बॉटल है वो जिमीज का कोई तो प्लास्टिक बॉटल है एंड it just spills whenever I try to use it because उसका जो बॉटल का जो क्या बोलते हैं ओपनिंग है वो काफ़ी बड़ा है एंड यू शुड ऑलवेज हैव लाइक ऐसे वाले ओपनिंग्स टू योर ऑयल बॉटल्स. सो this is, I got a cooker you guys. Home decor नहीं है ये but I just wanted to show you guys. Very cute छोटू cooker. This is for EV महारानी because उसके लिए मुझे राइस करना पड़ता है एंड राइस थोड़ा सा ही लगाना पड़ता है. तो when I cook it in the क्या बोलते हैं बर्तन वो नीचे चिपक जाता है. So cooker is always best for that. So ये छोटू cute cooker. इसके ऊपर और एक lid भी आया है but I'm not going to show you. And yeah, cute. Okay, all is done. अभी चला. Let's get to work. ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो भी सामान है हम ऊपर से पूरा निकाल के उसके ऊपर ये बिछा देंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा धूल मच रही है. लेट्स डू दिस. ऑनेस्टली ये क्यों लाया है आई हैव नो आइडिया. हु गॉट दिस, व्हाई डिड वी गेट इट, नो क्लू.
ऐसे हमने इसको बिछा दिया अच्छे से, लुक्स गुड। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव टेकन अ डिसीजन। पता नहीं वो कितना अच्छा दिखने वाला है, इट्स गोना बी ट्रायल एंड एरर एंड यू गोना सी एवरीथिंग ऑन कैमरा। सो जो यहाँ का मेरा छोटा एलेक्स डोर है वो मैं मेरे बेडरूम में डाल रही हूँ, एंड दिस एंटायर टेबल कबर्ड वी आर शिफ्टिंग ओवर देयर in that corner so that whenever I enter from my in this room, ये ऐसे ये कॉर्नर अच्छा लगे। वो एग्जैक्ट ये जो इसकी साइज है वो एग्जैक्ट वो वाले इसमें बैठ रही है। आई डोंट नो हाउ वी बोथ आर गोना पुल दिस ऑफ, वी आर स्ट्रॉन्ग, वी कैन डू दिस। एंड ये जो इतना कचरा यहाँ पे, कैन यू सी आई वॉज अबाउट टू फॉल ऑन दिस, देयर इज जस्ट सो मच सामान। ओके, सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग लाइक सो फार, क्यूट। अभी ये वाली फ्रेम मैंने मिस्टर DIY से ली है जो मैं दिखाना भूल गई, एंड आई थिंक इट वॉज फॉर, आई डोंट नो हाउ मच इज इट, एनी आइडिया, 500 रुपीज़। अभी इधर ना आई एम थिंकिंग टू पुट सम मिरर्स सो दैट वेन एवर आई क्लिक अ पिक्चर, लाइक अगर मैं ऐसे रेडी हो रही हूँ एंड आई कैन क्लिक अ पिक्चर एंड सामने एक मिरर हो सकता है। सो 1 मिरर हियर एंड 2 क्यूट मिरर्स हियर, लाइक अ एसिमेट्रिक सिचुएशन। वी वर सक्सेसफुल, ये प्रॉपरली बैठ गया मस्त एकदम, एंड आई थिंक इट लुक्स गुड, एंड बाथरूम से आके एकदम टकराने नहीं हो रहा है अभी हम लोग को। सो अभी हम इसको क्लीन करके विल ऑर्गेनाइज दिस, एंड इट्स गोइंग सो फार सो गुड। आई एम सेइंग दिस सो फार सो गुड लाइक सो मेनी टाइम्स इन टुडेज वीडियो, बट या। और इसके पीछे ना एक स्विच है, तो वो वेस्ट ना हो इसलिए हमने ऑलरेडी एक एक्सटेंशन बोर्ड डाल दिया पीछे, एंड वो फॉरएवर ऑन रहेगा। एंड ये इधर है, सो इन केस इफ वी वांट टू चार्ज एनीथिंग वी कैन चार्ज फ्रॉम हियर। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द डेवलपमेंट। यहाँ पे एक एलेक्स डॉट चले गया है, देन ओवर हियर दिस इज हाउ इट्स लुकिंग लाइक। आई एम लविंग इट ऑनेस्टली, दिस पिंक एंड वुडन वाइब। सो या, बैग्स रख दिए हैं। यहाँ से हमने कैंडल्स हटा दिए, तो कैंडल्स वापस उधर ही जाएंगे। सो आई हैव टू क्लीन दिस अप, एंड ये जो नीचे है वो पसारा, बट अदरवाइज एवरीथिंग लुक्स गुड। ये कॉर्नर हमने शिफ्ट कर दिया है, एंड 3 पेपर यहाँ पे और 3 पेपर उसके सामने।